Good evening, all, and welcome to Expiry Ki Baat with Kotak Securities. For those who joined us in the just give us a minute, please. Yeah. Could you put my camera on, please? I think we're back. Yes. Extremely sorry for the technical glitch. Welcome. Hello. We meet again today. Today in आज दोपहर में हमारा option Wednesdays का एक series था जहाँ पे we had conducted strategies and risk profiling of every individual strategy. And we meet again today at Sham ko. Now we are doing this session on Expiry Ki Baat. So thank you all for joining in. And so this is a brief about the expiry setup. Expiry का जो setup है अभी on the basis of the data parameters वो हम discuss करेंगे. Individually, technically क्या है, options का data क्या suggest कर रहा है, what is our outlook, and that's how we move ahead. So let's start off with a brief presentation on the same. So आज क्या रहा बाजार में? Today we opened with opened on a positive note and then gradually we inched higher. As of yesterday's session, कल के session में 17,500 के call में काफी open interest build up था. So that's why I think वहाँ पे हम थोड़ा सा अटके. Eventually the open interest build up shifted towards the 17,700 mark and we managed to close above 17,500, around the 17,550 odd levels. आज के दिन में यदि आप देखें तो मिड कैप इंडेक्स massively underperformed. Actually it closed with a minor loss, and so that was something which is not very exciting, so to say. FMCG, IT, financial services were performers, whereas auto and PSU banks underperformed. So this is what happened today. Now let's just go through the option chain. In the option chain now, as per today's session, if you see, put writing is more aggressive as compared to call writing. In put writing, we are seeing around 8,74,000 contracts which have added, whereas in call options, the aggression is lower at 2,21,000. The open interest build-up is seen at 17,500, which is expected to act as a support, whereas in terms of the resistance, we are looking at the 17,700, 17,700. So the range as per the options data that is anticipated for the expiry session is 17,500 and 17,700 on the higher side. Nifty spot closed at 17,550 odd levels. Moving ahead, FII ने क्या किया है? Pretty interesting. So FII segment has actually in the index option space, first we'll talk about index options के अंदर FI ने अपना net short aggression काफी reduce किया है, and pro segment ने long addition काफी aggressive किया है. So यहाँ पे FI और pro की both की positions net long positive bias suggest कर रही है, जबकि client net long से net short full flip किया है net long से net long आज के trading session में index options के अंदर. और अभी अब इंडेक्स फ्यूचर्स की यदि हम बात करें तो एफआई ने नेट शॉर्ट पोजीशंस कम की है, जबकि प्रो की ओवरऑल पोजीशंस काफी लिमिटेड है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बायस नहीं है. तो एफआई और प्रो की यदि हम डेटा को देखें तो ये ओवरऑल पॉजिटिव बायस की तरफ सजेस्ट कर रहा है, which is broadly in line with the overall sentiment of the market. Bank Nifty again in today's trading session was pretty volatile. First outperformed, then managed to go flat, and then eventually closed with marginal gains. Highest open interest is seen at 41,000 on the call side.
and on the put side we're seeing open interest at 40,500 odd levels. So आज का दिन यदि आप चार्ट पे देखेंगे तो it was pretty range bound, ऊपर नीचे eventually did not manage to close towards the high of the trading session, whereas Nifty was near the highs of the trading session and closed pretty strong. Yeah, so that's the setup for Bank Nifty. Moving ahead, what is the medium term outlook? So if आप जो हमारे I'm sure आप में से काफी लोग हमें regularly follow कर रहे हैं and are aware of how we are working and what is our view been over a period of time. So overall our sentiment is quite positive right now. We believe हमें लगता है कि एक मार्केट में सेंटिमेंट का शिफ्ट हुआ है जिसकी वजह से मिड मार्च के आसपास से हम लोग ने काफी पॉजिटिव स्टैंस लिया है. हमें डेटा के बेसिस पे जो ऑप्शन राइटर्स हैं मेनली वहां से हमें एक लॉन्ग कंफर्ट दिख रहा है व्हिच इज सजेस्टिंग दैट any possible dip will be bought into and overall bias should continue to remain positive. April series में in specific momentum level जो establish हुआ है, again right now I'm talking about the rather medium term and larger picture. 17,140 का एक strong support है जो current momentum को support करेगा. So some knock off थोड़ा बहुत यदि correction भी आता है तो I don't think that is too much of a concern. But यहाँ पे ये बात है कि आपको positions जो भी आप ले रहे हैं उसमें आपको रिस्क मैनेजमेंट श्योरली मेंटेन करना है बिकॉज आप आपके सपोर्ट लेवल से 2 से 2.5% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं. सो दैट इज समथिंग दैट वील हैव टू टेक एक्सट्रीम केयर ऑफ. आईटी में, एफएमसीजी में और प्राइवेट बैंकिंग में हमें थोड़ी वैल्यू अपॉर्चुनिटीज पोजिशनल पर्सपेक्टिव से दिख रही है. सो दोज आर द स्पेसेस दैट वी लुक एट. नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड द एक्साइटिंग पार्ट इज एक्सपायरी की बात के स्पेसिफिक पॉइंट्स. सो ओपन इंटरेस्ट हमने देखा, हमने आपको बताया कि 17,500 और 17,700 पे है. सो दैट्स फ्रॉम द ओपन इंटरेस्ट साइड. शॉर्ट टर्म मोमेंटम एंड सेंटिमेंट अगेन कंटिन्यू टू रिमेन पॉजिटिव व्हिच इज ब्रॉडली इन लाइन विद द मीडियम टर्म आउटलुक जो हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया. दैट रिमेन्स पॉजिटिव. कल आरबीआई का मीटिंग का आउटकम है. सो ऑब्वियसली एन आरबीआई डे इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन क्वाइट वोलेटाइल, is expected to remain witness a lot of swing movements. तो इस केस में इट्स ऑलवेज गुड टू हैव योर ब्रॉडर फ्रेमवर्क रेडी एंड अंडरस्टैंड कि आप किस हिसाब से ट्रेड करना चाहते हैं. मेरे हिसाब से कल के लिए 17,400 इज लाइक योर बेस सपोर्ट लेवल. यदि वो टूट जाता है तो देन फॉर द ट्रेडिंग सेशन it becomes an aggressive call writing opportunity with limited upside and not much happening. But the possibility of that happening is extremely limited unless कोई बहुत ज़्यादा negative news आ जाए. So otherwise we think any correction, any dip, one can look at actually there are two options that we can play out. One is a range bound strategy जहाँ पे हम 17,400 और 17,600 या 650 जो हमने इनफैक्ट आज सजेस्ट किया है हमारे टेलीग्राम चैनल पे कल की एक्सपायरी के लिए 17,400 का पुट और 17,650 का कॉल हमने टुवर्ड्स 3 o'clock एक्सपायरी के लिए सजेस्ट किया था बिकॉज वी वर ऑफ द ओपिनियन के दो पॉजिटिव बायस, मार्केट 2-3 दिन में अच्छा खासा रैली किया है, आरबीआई का इवेंट है, थोड़ा सा करेक्शन यदि आता है तो रेंज बाउंड में एक्सपायरी निकल सकता है. सिमिलरली बैंकिंग में 40,800 और 40,170 इज द हायर साइड. अगेन इफ यू सी बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट आपका 41,000 पे मैक्सिमम बिल्डअप है. तो टेक्निकली बैंक निफ्टी इज सजेस्टिंग टेक्निकली लेवल्स वाइज आल्सो एक रेजिस्टेंस है 41,100 के आसपास और ऑप्शंस के डेटा के हिसाब से भी 41,000 पे एक रेजिस्टेंस है. सो आई थिंक रेंज बाउंड की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा बन रही है करंट सिचुएशन में. अब यदि हमको कल प्ले करना है तो कैसे हम प्ले कर सकते हैं बिकॉज एक्सपायरी के सेशन में obviously we'd want to be into action. So point number 1 is range bound movement में we would want to play this larger range of 14.4 to 14.6 and try to capitalize on the theta decay of these options. Intraday basis पे on opportunity setup we would like to go long and strong and only bet on the positive side. Why? Because medium term, short term sentiment is positive and we believe when the leverage data is placed according to the broader sentiment we would want to play accordingly only. Yeah, तो यदि इंट्राडे में हमें MACD reversal plus RSI in a comfortable zone, we don't want RSI to be overbought at all. ऐसा नहीं है कि RSI overbought में with MACD reversal मिले तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, बट वहां पे रिस्क थोड़ा ज्यादा हो जाता है
3 बजे के बाद में यदि RSI ओवरबॉट होता है और MACD रिवर्सल मिलता है तो still I would be comfortable taking an option buy bet at that point of time also. But during the day, 9:30 to around 2:30, I would actually want the RSI to be comfortable so that the market can actually intraday there is space for it to make an up move and then maybe consolidate again, get normal. That cycle keeps repeating. So that's the setup that we would want to trade. Secondly, again, I'm sure most of you आप लोग में से काफी seasoned option players हैं and I really don't need this. Position sizing का please ध्यान रखिएगा. Every opportunity, every trade has a probability of success and failure. Till now, again, for those who've been following us and for those who are not following us, we would suggest you to join our Telegram channel. हमारे Telegram channel पे आइए. Expiry trades भी हम specifically with logic post करते हैं. Apart from the other trades, educative content भी दे रहे हैं. Last 3-4 expiries, I'm sure our regular listeners would be aware that we've been doing pretty fine, and the trades have worked well. As a matter of fact, last Monday ki Fin Nifty ki expiry was really well, wherein the 35 rupees option that we'd suggested went up to 60-70. Not that past recommendations can actually suggest anything of the future, but what we're trying to say is कि हमारा setup थोड़ा logical है और हम वो सेटअप के साथ आपके साथ शेयर करते हैं. अभी भी हमने आपको ब्रॉडली पूरा फ्रेमवर्क शेयर किया है on the basis of which we are working. So in a nutshell, यदि मुझे आपको बहुत कैटेगरिकली प्लेस कर रहा हूँ, so 17,575 के ऊपर सस्टेन करेगा 45 मिनट्स 1 आवर, तो हम ऑप्शन बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे. बीच में ब्रॉडली हम रेंज बाउंड खेलना चाहेंगे विथ swings on the higher side के लिए RSI MACD का combination देके we'll look at setup and we will buy ATM options only with a predefined stop loss, keeping position sizing in mind. Yeah. और 17,400 के नीचे यदि बाजार टिक जाता है, then I think we'll rather call it quits, and aggressive traders can maybe consider doing a call writing setup and play on the negative side for limited upside for tomorrow's trading session in specific, which would not be in line with the broader sentiment that we're working at, and that's why we're not highlighting that so much. So range bound looks mostly probable. I think as we speak, I'm sure again all of you would be tracking, the markets are marginally down, so it's highly possible that the range bound strategy that we've suggested would work well. And then on opportunity basis, as things mature, we will continue to share the trades with you. So I hope this entire setup that we've placed is helpful to you. You can use this independently, or you can plug and play this into your setup only, and I'm sure it will be of help to you in terms of taking your setup a step ahead as well. So yeah, that's it from my side. I hope all of you got a clear view and an objective view from our end. Lastly, again, at the cost of being repetitive, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए. उसका लिंक यहाँ पे चैट में पोस्ट कर दिया गया है. अगर ये लिंक में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप टेलीग्राम पे जाके कोटक सिक्योरिटीज सर्च कीजिए, जो मैंने यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है. कोटक सिक्योरिटीज विद अ ब्लू टिक इज द ऑफिशियल कोटक चैनल, जहाँ पे हम हमारा एजुकेटिव कंटेंट ऑन अ रेगुलर बेसिस पोस्ट करते हैं. So thank you so much and hope you have a good trading session tomorrow, and we'll meet again pre-expiry on next Wednesday. Thank you and have a good night.